Not, yes, it is start. Okay. There was a joke in WhatsApp but I was sharing with you. एक लैंडलॉर्ड ने अपने किराएदार से कहा कि सारे साल तो तुम्हारी बहुत सारी कजन्स आती रही, आज राखी वाले दिन तेरी कोई भी कजन नहीं दिखाई दी। हाँ वो अपने आप आते। So these were the virtual cousins जो उसे सारे साल उससे मिलने आते थे, पर रक्षाबंधन वाले दिन ये भी कजन नहीं है उसके उससे मिलने। So these were the virtual cousins. With this note, we start with virtualization. Before we see what is virtualization and how we will be using it, all of you know the concept of virtual memory? Sure. What is virtual memory? All of you know? What is the concept of computers which we use in virtual memory? What is the key concept? अभी मैंने नाम ले दिया था वैसे उसको. What is the concept? Paging. To be more precise, it is demand paging. What is virtual memory? That your system does not have so much amount of memory, but still it appears that your system has this much amount of memory. The concept was to execute a program, your program should be present in which memory? RAM. To execute a program, your program requires main memory. Unless and until your program is in the main memory, you cannot execute the program. It is residing in the hard disk file. But when you want to execute, it should be in the main memory. Now you want to execute a program which requires 20 KB of main memory, for example. But your system has only 10 KB of main memory. So your program will not execute. 10-20 KB चाहिए program को, and the program, your system has only 10 KB, तो आपका program execute नहीं होगा. पर जब आपका program execute हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपके system में action में क्या था? 20 KB मेमोरी थी, तभी तो वो execute हुआ, because there is a thumb rule that to execute it 20 KB होनी चाहिए थी, तो आपको लगेगा कि आपके system में 20 KB थी. But it was not the case. हुआ क्या? Your program was divided in 2 pages, I say. 10-10 KB के या 4 पेजेस 5-5 KB के 10-10 KB के 2 पेजेस में डिवाइड कर दिया. जिस पेज की जब जरूरत थी वो पेज मेमोरी में गया, रन हो गया, बाहर आ गया. फिर दूसरा पेज गया, बाहर आ गया. तो डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट लगा एंड इट वाज द सेम थिंग अप्लाइज इन क्लाउड. द सेम थिंग अप्लाइज इन क्लाउड. इट इज अ वर्ड ऑफ virtual. Everything is being virtualized. Your CPU, your RAM, your hard disk, the whole infrastructure is virtualized. One computer, it appears as if there are 1,000 computers. And number of users keep on coming, the computers keep on increasing in virtual computing. And we think that we are having our own computer, but it is not the case. How this is happening will be covered. This is something what I am saying is not the pure technical thing. These pure technical words में it is not कि ऐसे हो जाएगा कि 100 बन जाएंगे 10 बन जाएंगे. To have an illusion that what is virtualization, what is happening, we say that इस तरह से कुछ हो रहा है. This was the concept of virtualization, which I have already explained. Now, some of the definitions of virtualization. It is a technology which is making a transformation in IT by saving cost, energy and time. Virtualization provides an emulation of hardware to different virtual machines. A virtual machine is an illusion of existing machine which uses the resources of underlying machine and works as actual machine. What is a virtual machine? You are having your own machine. In your machine, we will create a virtual machine. Today, we will do it in the post session. We will create a virtual machine in your own machine, and this virtual machine will be using your underlying hardware. And you will think that you are working on 2 different machines. All of you must have used Java. इसमें एक term भी सुना होगा Java virtual machine. JVM. So what was it? Java virtual machine. एक virtual machine थी. Actually में कोई machine नहीं exist कर रहा था. But your code was converted into a byte code. Why we say that it is platform independent? What is the reason? Basic reason क्यों है?
बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, इसलिए बाइट कोड जनरेट कर रही है. Now why this बाइट कोड? What is the basic reason of this बाइट कोड that it makes Java platform independent? बाइट कोड कहीं भी कॉपी करके यूज कर सकते हैं. बाइट कोड की कॉपी को यूज कर पा रहे हैं. What was the basic reason? See, technically speaking, it is not possible to generate a code. We are converting a source code into some code. Now this source code is being converted for a virtual machine. जो मशीन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, हमारी बनाई हुई थी, उस मशीन को क्या समझ में आ रहा था? बाइट कोड. और JVM फाइनली बाइट कोड किसमें कन्वर्ट हो रहा था? ऑब्जेक्ट कोड में. फाइनली तो कन्वर्ट करना पड़ता ही है. सो इट इज नॉट, कोई जादू नहीं हो रहा था, सिर्फ एक नई टर्म कॉइन कर दी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. एक्चुअली इफ वी से यू कैन से दैट इट इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. भाई रन तो तभी होगा ना जब JDK पड़ी होगी. फाइनली बाइट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा ना. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तब होता, मैं कहता जावा का कुछ पढ़ा ही नहीं है, रन करके दिखा दो. हो सकता है नहीं. सो वी आर conceptually we are still creating something which is for JVM, Java Virtual Machine. The same thing is with cloud. What is, okay, can you tell me the difference between emulation and simulation? A thin line difference, even I can't explain, to be very frank. Emulation, simulation, can anyone help me? Emulation and simulations, there are two terms. Like suppose there is a real life situation and we want that situation to be depicted in an artificial environment. Very good. This is simulation. very good. Simulate is where we use it in actual. Where we use it in? Actual like real life. See, both the things give you an experience of a device which you are not using actually. Both the things give you an experience that you are using something which is not actually existing. In simulation, we are developing an environment where you can have the results and you can feel as if you are using that thing. In emulation, we are making a copy of that thing, basically. A hardware, we are emulating it. We are not developing an environment. We are developing a copy of it and you are emulating it. There is a thin line difference. Actual difference, there is no bookish definition of it. जैसे Android app में आप emulate करते हो, as if you are running on a mobile phone, although you are emulating on an emulator in the laptop. In simulation tools, जैसे आपने एक tools हमने use करा होगा NS2, सुना होगा, network simulator. We are not developing the whole network, but you are simulating जैसे same results मिलेंगे जैसे NS2, जैसे network में मिलता है. I have not used NS2, मुझे नहीं पता, but famous है इतना पता है NS2. Virtualization is to run different operating system and different applications on the same machine at the same time, giving an illusion that each is running on a different machine. What is it? On the same machine, you are having different operating system and you are running different applications at the same time. You will feel as if each individual user is having his own machine. What is the difference between virtualization or dual boot system? What is the difference? So that virtualized environment, you are running an operating system and then you install some virtual machine software where once again you run an operating system. In a dual boot environment, an operating system behaves as if there is no other operating system. Very good. See, in a dual boot system, only one operating system is booted at a time. In virtualization, एक ही सिस्टम है, उसके ऊपर एक साथ दो operating systems. One physical machine to support multiple virtual machines that run in parallel. Before we proceed, these are some of the definitions. Let me explain in some more simpler terms what is virtualization. है क्या? एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ था, एक मशीन की तरह बिहेव कर रहा था. मैंने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे और उन सॉफ्टवेयर की मदद से, अभी देखेंगे आगे क्या सॉफ्टवेयर, उन सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने इसी मशीन के ऊपर दो नए ऑपरेटिंग सिस्टम और डाले. सपोज करो एक विंडोज पड़ा हुआ था, मैंने एक लिनक्स और डाल दिया और उबंटू और डाल दिया विंडोज 2. अब तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पैरेलली तीन डिफरेंट मशीन्स की तरह काम कर रहे हैं.
तो अलग अलग यूजर हैं, इसे लिनक्स चाहिए, इसे लिनक्स की तरह मिल जाएगा, इसे उबंटू चाहिए, इसे उबंटू की तरह मिल जाएगा, किसी को विंडोज चाहिए उसे विंडोज। तो मेरा एक सिस्टम के ऊपर 2 वर्चुअल मशीन बन गई। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये एक सिस्टम अब 2 मशीन की तरह काम करेगा, 2 वर्चुअल मशीन की तरह काम करेगा, जबकि इसके ऊपर खुद विंडोज नहीं थी। इसका जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, वो विंडोज था। तो मैंने उसके ऊपर लिनक्स और वो इंस्टॉल कर दिया और दोनों पैरेलली काम करेंगे। डुअल बूट में क्या होता, अगर मैं विंडोज की तरह ऑन कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम सिर्फ विंडोज की तरह ऑन करेगा, अगर मैं लिनक्स की तरह ऑन कर रहा हूँ तो सिर्फ लिनक्स की तरह। दैट वाज द डिफरेंस। तो ऑपरेटिंग वर्चुअलाइजेशन ने क्या पावर दी कि द सेम मशीन कैन हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम and different applications can run parallelly on the same machine. The key concept behind it, if we see that some technical terms, is time sharing, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है ना, time sharing, round robin scheduling, multi processing, multi programming. The key concept, it is using the same concept of computer science which was already in existence. Now virtualization is purely abstracted. Virtualization is purely abstracted. Backend पे क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। हमें तो एक नई मशीन बनी हुई मिल गई जो आज हम बनाएंगे आफ्टरनून में। नई मशीन बनी हुई मिल गई और हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास एक नई मशीन है जिसे हम यूज कर रहे हैं। User will think that he is using a Linux machine, although in the hardware it would be a Windows. It is the technology of abstraction. Virtualization is a framework of methodology of dividing the resources of a computer into multiple applications. A very beautiful definition. What is it? It is we are dividing the resources into multiple execution environments. मेरी जो resources थी मैंने divide कर दी अलग अलग environment, execution environment. कुछ तुम use कर सकते हो, कुछ तुम use कर सकते हो, कुछ तुम use कर सकते हो, कुछ तुम use कर सकते हो. By applying one or more concepts or technologies such as hardware and software partitioning, there can be n number of technologies which can be applied for virtualization. I am sharing some of them. Hardware and software partitioning, time sharing, partial or complete machine simulation, emulation, and quality of service. You can have different technologies to achieve virtualization. Is it clear? To sum up, what is virtualization? Multiple operating system on a single physical system. Different operating system lying on a single physical system. Sharing the underlying hardware. All the machines are sharing your underlying hardware. Concept of time sharing can be used. Complete or partial emulation of the resources. And parallel execution. This is what we are saying is virtualization. Any doubts in virtualization? A doubt can always be there, like एक ही चीज़ है तो 10 जनों को कैसे satisfy करेगी, कैसे होगा डाउट से, we will be covering it. I'll try to cover. Though actually, unless we build it, implement it, it can't be explained theoretically. But still, I'll try to cover it. Demand paging का concept थोड़े से revise करना. See, what was demand paging? Your program is treated as a page. Your program has a 20 KB. We divide it in 2 pages of 10 KB. And we know that the whole program is not required at the same time. All the instructions are not going to be executed at the same time. तो पहले शुरू के 10 KB गया, फिर बाद के 10 KB. Instead of moving the whole program, we make shift page 1 and then page 2 into the main. That is yeah. That's what I am saying. A large number of softwares are required. Large number of softwares. वो अभी तो बस वो उतने जनों के पास satisfy करना होगा. उसके ऊपर जो वर्किंग मशीन में चला है और उसमें जो सब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वो पार्टीशन मुझे शो करेगा वर्चुअल मशीन में? यस. नहीं, वो आपकी सेपरेट मशीन है जिसको आपको फिजिकल मशीन को Can you
As an administrator, you can do anything, sir. You can do anything. See, there are two ways to virtualize. What I will be showing today will be virtualization using Microsoft Azure. Another way is the actual virtualization which we do in our lab, जो मैंने अपने system में करा. For it, it requires n number of software and it is a practical exercise which takes a large amount of time. एक दिन में नहीं सीखा सकता. That is the actual virtualization. Today we will see, we will build a virtual machine using Microsoft Azure after most. A greener approach, what energy efficiency we say. Although this is also something which is very much debatable, that when so many resources we are using, then how does it become greener? इतनी सारी हॉकी फील्ड मैंने बताई, इतने सारे अपने सिस्टम लगाए, तो ग्रीनर क्यों हो गया? उसमें तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होनी चाहिए, नहीं? उसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होनी चाहिए. But still we say that virtualization is greener. So how it is? Let us see something to it, that how it becomes greener. The very first line explains almost each and everything. Most servers only use 5 to 15% of their capabilities on an average, while consuming 60 to 90% of their peak power. What does it mean? Can anyone explain? Yeah. Says that Please sit it here. Remain seated. says that if the resources of a computer system they are not used to their peak capability. They are not used to that. Most of the time, if you even see the task manager in a Windows machine and The CPU is RAM remaining and idle. hard disk, the Very good. usage is very less. See, we are only using 5% of the capability of the server, but we are actually, they are consuming 60 to 90% of their actual power. जितना उनका पावर कंजप्शन है, उतना यूज नहीं हो रहा, पर पावर कंजप्शन पूरा कर रहा है, जबकि उनका यूजेज इतना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से that all of you are carrying a pen drive or a hard disk of 1 GB, and there are 50 participants sitting over here. So how much GB storage you are having? 50 GB. हर एक के पास एक GB. एक्चुअल में आप उसके 1 GB में से 10 KB भी यूज नहीं कर रहे हो. तुम पैसा भी वेस्ट करा खरीदने का, टाइम भी वेस्ट करा और रिसोर्स भी वेस्ट करी. उसी कॉन्सेप्ट को लगा के गूगल ड्राइव बनाया कि क्यों अपनी अपनी हार्ड डिस्क खरीदो, हमारी ड्राइव में अपना डेटा को स्टोर करो. इट इज अ ग्रीनर अप्रोच और नॉट. We are increasing the utilization, so it shift to a greener approach. In the same way, the servers, we will be seeing the effects also. The solution is virtualization. Virtualize कर दो चीजों को. Use one server to host multiple applications. Reduce energy consumption, reduce COT consumption. एक ही सर्वर पे we have multiple applications, so that the server can be utilized to its full capability. पावर तो पहले भी उतनी खर्च हो रही थी, पावर अब भी उतनी खर्च होगी, पर कैपेबिलिटीज उसकी कम खर्च कर रहे थे. तो अब एक यूजर नहीं है, अब n नंबर ऑफ यूजर्स हैं गूगल ड्राइव पे जो कि उसे यूज कर रहे हैं. तो सेम सर्वर पे जब पावर पहले भी वो 90% पावर कंज्यूम कर रहा था, पर एक यूजर के लिए, अब मैंने एक CPU खरीदा, मैं उसको बहुत कम यूज कर पा रहा हूँ, पर पावर उसकी पूरी खर्च होगी. अब मैंने उस CPU को अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, तो उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ा दी मैंने, उसका कंजप्शन बढ़ा दिया, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया, पावर तो उतनी खर्च होनी थी. सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ greener. That is how we are shifting the energy. Although a large amount of energy is required, but with this large amount of energy, large amount of users also there. Therefore, we say energy consumption becomes less. Running fewer highly utilized servers frees us space and power. Less space and power is better for the environment. Saves. We'll be sharing after 2-3 slides the actual statistics also, 2 examples of statistics, how energy is being saved by Google. Need for virtualization. What is the actual need? Why do we require virtualization? At present, what we are using is, there is a single operating system image per machine. There is a single operating system on a machine.
software and hardware are tightly coupled. Whatever software we want to run, it depends upon the hardware, the basic hardware we are having. We cannot have that we can run it on some different machine. Mac के लिए अलग चाहिए, उसके Windows के लिए अलग चाहिए. Running multiple applications on the same machine often creates conflict. अगर मैं एक साथ बहुत सारी applications एक ही machine पे run करूँ, तो conflict हो जाएगा. Machine hang हो सकती है, system hang हो सकती है. Inflexible and costly infrastructure. At present, our infrastructure is not flexible. It is inflexible. You cannot move to different applications at the same time, and it is a costly affair. So, what is the need? We require to virtualize our atmosphere. We should have virtualization. एक ही साथ एक सर्वर पर कई सारी एप्लीकेशन रन कर सके. That is the need of virtualization. And in cloud computing, why was it required? We say that you can use any amount, any time, anywhere. बोल देते हैं. कैसे करेंगे? इतनी सारी resources कहाँ से पैदा करेंगे? इतने सारे servers कहाँ से लाएंगे? So we virtualize these servers. Same machine, it is assumed it can process n number of applications. But remember, technically there is always a restriction. Therefore, the size of the data center is huge. There is not one server. There are n number of servers, and these n number of servers are distributed virtually, so they become 2n, 3n, 4n. But still there is a limit. Number of users increases, we have to increase the hardware. But downtime we do not incur because एक साथ सारे users नहीं आ रहे. एक सर्वर अगर मल्टीपल पे काम नहीं कर पा रहा तो दूसरे वाले की इमेज जो भी उसका यूज करते हैं. And the company keep on adding physical servers, but obviously, otherwise it will crash. What virtualization gives? Hardware independence of operating system and application. How it gives, we will see. Virtual machines can be provisioned to any system. Any system you have, you can create a virtual machine on it, irrespective of the operating system, irrespective of the configuration of the hardware. Today on my Mac, I will be configuring a Linux machine or a Windows machine using Microsoft Azure. We will be working on Microsoft, so we will put a Windows machine too. Can manage operating system and application as a single unit by encapsulating them into virtual machine. It can manage operating system and application as a single unit. Clear? How is it possible? We will see very soon. This is a virtual infrastructure. An underlying hardware of a data center, having storage, network, server, storage. A huge hardware is there. And below this hardware, what is there? A virtual infrastructure we have created. Different virtual machines used by different users. This is a picture of virtualization in cloud. What I was trying to explain. Still, I am again repeating that this needs to be expanded, because सारी जिंदगी वर्चुअल पे तो नहीं जी सकते ना, कुछ ना कुछ तो सच्चाई चाहिए. तो this needs to be expanded. ऐसा तो नहीं हो सकता कि है ही नहीं नीचे कुछ भी, बस सब कुछ वर्चुअली हो जाए. So capabilities are always restricted depending on how much users you have. See, there is a website called indiaresults.com. जैसी कोई बोर्ड का रिजल्ट आता था तो वेबसाइट हैंग हो जाती थी. Now they have shifted to the cloud. Hang नहीं होता. Can anyone tell me 99.95% downtime का मतलब कितना पूरे साल भर में आपको डाउन टाइम मिलता है? Sorry, 99.999. 3 बार 9 0.53 minutes. 0.53 minutes it gives. 99.9999%. पूरा एक चार्ट है, I don't know whether it is there in my slide, कि अगर 99.9 है तो कितने दिनों का डाउन टाइम है, कितने दिनों का डाउन टाइम है. So that is the downtime which cloud is providing. Although till date Microsoft gives a downtime of 99.95%.
That amounts to, I think, some couple of hours, 99.95%. And 99.999 amounts to 0.53 minutes on that. पता भी नहीं चले if this is the SLA. What is SLA will be covered. Now these are the benefits of virtualization. I think I've already made this point. I'll just stop. Now he has asked a query that what is the meaning of percentage, and sir also asked something, what is quality of service. That means I think it is the time to cover this thing. See, whenever I go to a restaurant, I say that what is your service, कितनी देर में खाना आ जाएगा, किसी उसकी quality होगी. In cloud or in technical terms we say it quality of service. जो सर्विसेज मुझे क्लाउड से मिलेंगी उसकी क्वालिटी क्या होगी. और क्वालिटी के टर्म्स में मैं बात करता हूँ कि आज मैंने लॉगिन करा और पता चला आज मुझे काम करना था, अपनी वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाना था ऑफिस 365 का, और आपने कहा आज ही मेरी साइट डाउन. सो दैट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस. डाउन टाइम जो मैं परसेंटेज की बात कर रहा था कि कितनी चांसेस हैं कि आपने लॉगिन करा और वो साइट आपको आज डाउन मिली. दैट इज डाउन टाइम. 99% चांसेस है कि साइट बंद मिलेगी, तो हमने कहा 99%. 99.999% चांस है कि साइट बंद मिलेगी. उसकी कितनी चांसेस हैं कि पूरे साल भर में सिर्फ 0.53 मिनट के लिए वो साइट बंद होगी. 0.53 मिनट, पूरा 1 मिनट, यानी 53 सेकेंड के लिए पूरे साल भर में वो साइट बंद होगी. अगर उसका SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगर आपने साइट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे होस्ट है तो आपकी साइट 99.95% अप रहेगी. यानी अगर कोई यूजर उसे एक्सेस करेगा तो पूरे साल भर में ऐसा सिर्फ 10 मिनट या कुछ मिनट्स हैं, इतने मिनट के लिए वो साइट डाउन मिलेगी मैक्स, अगर मिली तो. अगर इससे ज्यादा मिली तो माइक्रोसॉफ्ट विल नॉट चार्ज यू और विल रिटर्न सम अमाउंट ऑफ इट. दैट इज वी कॉल इट इतना परसेंट आपको आप मिलेगा. आपने कहा कि आपने उस दुकानदार से सामान खरीदा या आपने आज एक कार खरीदी, तो उसने कहा कि 5 साल तक आपको एक कार बिल्कुल परेशान नहीं करेगी. अगर 5 साल तक इसने आपको परेशान करा तो आपका मैं फ्री सर्विस करूंगा, ये सब करूंगा. तो ये आपके कार के बीच में एग्रीमेंट हुआ. ठीक है. अब मोबाइल ऑपरेटर्स हैं. नाउ गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड दिस थिंग कि अगर आपका नेटवर्क डाउन होगा तो उस पेनल्टी लगेगी. दैट इज SLA, सर्विस लेवल. तो व्हेन दिस कॉन्सेप्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड, जब आप अपने लिए नया कनेक्शन लोगे तो आप उससे बात कर सकते हो कि भाई मैं वोडाफोन लेने जा रहा हूँ, कितने टाइम साल भर में कितनी बार एक तेरा डाउन होगा, तो नीचे लिखा होगा कि इतने % आपको आप मिलेगा. अगर इससे ज़्यादा मोबाइल नेटवर्क गैप हुआ तो यू कैन क्लेम कि आपका नेटवर्क डाउन था. Government has already announced this policy. Now they are implementing it. How much time it takes, I do not know. But it was in news. TRAI has already announced कि डाउन टाइम होने पे, मोबाइल सर्विसेज ना मिलने पे, the mobile company will pay to the user. So they are expecting it. कैसे होगा मुझे नहीं पता. I don't know कि कैसे वो करेंगे. So TRAI has recently announced it, or yesterday उनका नया chairman RC Sharma I think has taken the charge for this thing, who was IT minister somewhere. Now these are the benefits of virtualization. Now these are the facts which I was telling with you before we move purely to the technical world of virtualization. PUI is a term, power usage effectiveness. These are the facilities which we require. चिलर्स चाहिए, AC चाहिए, स्विच गेट चाहिए, UPS चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए on the back end. And these are the IT infrastructure, server, storage and equipment. And then we compute a term called power usage effectiveness. See, Google की PUI 1.2 है, Salesforce की 1.5 है. कितनी वो अपनी पावर को यूज कर पा रहा है, कितनी पावर को यूज कर पा रहा है, डिपेंडिंग मीन्स इतनी पावर तो उसकी लग रही थी जो इक्विपमेंट्स उसने लगाए हैं, और